वेलकम बैक टू कोड टू कॉर्टेक्स। आज हम करने वाले हैं क्लाउड शेड्यूलर क्विक स्टार्ट लैब। सो क्लिक स्टार्ट लैब। देन नेक्स्ट हम इसे इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करेंगे। क्लिक अंडरस्टैंड। उसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा एंड देन यू हैव टू क्लिक आई एग्री एंड कंटिन्यू। देन नेक्स्ट यू हैव टू क्लोज द ट्यूटोरियल फ्रॉम हियर। Now onto the task 1, you have to enable the cloud scheduler API. So come here, search scheduler, and here's the cloud scheduler API. Okay, this was the documentation. Now scheduler API, here it is, click on it. Now click enable. Now after this is enabled, we will come back here onto the task 2. We have to run some commands of pub/sub, for which we have to activate the Cloud Shell using this icon. Right. Then come back to the lab, copy this command and paste it here. Now next, copy this command, run it here. And click check my progress. And the lab ends here. You can now just end this lab. If this video was helpful, give it a like and subscribe our channel for more such videos.